Okay, good evening to all of you. Am I visible, audible? Just let me clear it once. Okay, good evening to all of you. Am I visible, audible? Just let me clear it once. Okay, good evening to all of you. Am I visible, audible? Just let me clear it once. Kindly confirm me. Kindly confirm it once if everything is clear, audio, video, everything is clear. Once confirm me, just type yes. Is everything is okay? Confirm me once. Good evening, people. Acha, yes, okay. Thank you, Priya. Thank you for confirmation that everything is okay. Okay. So now we are moving forward. Okay. And now we'll discuss the things that are there and why we are here. So as you know, moving forward. Okay. As you know that we are here for the section of the geography, and overall we'll talk about the importance of the geography. We'll talk about the syllabus of the geography also. So what is the syllabus of the geography and what are the things that you need to study in the section of the geography? Okay, that will come in your examination. Clear? So first, let us understand that for whom these classes are. So these classes are for the PCS examinations.
of the Sikkims and the Arunachal Pradesh. So definitely the overall syllabus of the all the PCS that happens in the state of India, again, are same. But even though there are some regional questions that has been incorporated in the section of the state PCS of that particular state, तो उस state का जो state PCS है ना, so वो भी क्या बहुत ज़्यादा important होता है, तो overall all the questions from that state is also something very very important, very very important. ठीक है, so this is what you need to consider. This is what you need to consider. Clear? Now, so moving forward, first I will talk about the overall meaning of geography. So let us first talk about that what is the literal meaning of geography. So in today's class, I'm just going to talk about the syllabus of geography. Okay? And as sir told me that this class should be bilingual. So sometimes I'll speak Hindi, some English I'll speak because of what I have been told that you are comfortable in bilingual means English. So overall the language we'll use will be English only. Okay, now let us talk about first the geography, what it means. Geography, so this geography is made from the word geo, and next word that we have is graphy. Now geo means the earth, and graphy means overall writing or describing something. So the meaning of the geography is description of earth, description of earth. So geography means you will give the description of earth in section of the geography. ठीक है ना? One more word is there, that is the geology. Geology, which means the study of earth. Why? Why geology means study of the earth? Because this geo word means the earth, and this logy means the study. So geology means the study of earth. Clear? Now, overall, if I talk about the section of the geography, so what you will study? So basically, the section of geography has been divided into the three parts. Three parts, or the whole geography is divided into three parts. First comes the physical geography. Physical geography. Take. Next comes the your economic geography. Economic geography. And third thing is there, that is the human geography. So these are the three broad classification of the geography. This is the three broad classification of the geography: physical geography, economic, and human geography. In the section of physical geography, we will talk about overall the various physical things or various things that are there that we see on the day-to-day basis. So, day-to-day basis, पे whatever things we see, it will come under the same. It will come under the same. Clear? So, in the section of the physical geography, we'll talk about all the physical features of the Earth. So, all the physical features of the Earth will be incorporated, will be included under the same. Clear? All the physical features of the geography will be included in the section of the physical geography. Clear? Next comes the economic geography. You know, economic means it is related to the money or the monetary thing. Anything which is monetary or anything which has some monetary association or some monetary benefits it has comes under the economic geography. Okay, so it's in section of the economic geography. All the things that has some affiliation with the monetary benefits will be included here. So, for example, someone is extracting the coal from the field, so definitely it will has the some monetary effects. Clear? And next comes the last one is the human geography. Human geography means overall. That overall here we will talk about the, for example, population. ठीक है, we'll talk about the density, and overall we'll talk about the, for example, uh, distribution of distribution of
water resources, or simply you may call them as the resources. Okay, so these things are there in the section of the human geography. So here we have three kind of geography. First, we talked about the physical geography, economic, and the human geography. If I talk about what is there in your syllabus, in the syllabus of the PCS, the thing which is most in the part is the physical geography. Physical geography. Clear? This is the biggest chunk it has. So overall, the topic like the economic geography and the human geographies, they are very much important from the means point of view. So you may call them as the means oriented. So these 2 points, ये जो 2 point है, these 2 points are the means oriented. ठीक है? Means if anyone has any difficulty with the language, just let me know. ठीक है ना? If कोई दिक्कत हो language की, है ना? This much of English is, I believe, okay. ठीक है? So this economic geography and the human geography are important from the means point of view, and the physical geography are important from the prelims point of view. ठीक है ना? From the prelims point of view, it is very much important. Clear? Now we'll talk about the physical geography, which has a lot of weightage in the prelims. So because if you don't pass the prelims, there's no chances of in the main section. ठीक है? So now we'll talk in details about the physical geography. Physical geography. ठीक. Now this physical geography contains two things, that is the that it will contain, for example, it will contain the geography of the world and geography of the India. This means what? Physical geography is the same everywhere. For example, let's say if you go in America, if you go Russia, so definitely all the natural phenomena will be same, है ना? So they will not going to change just because of the change in the geographical position. So they will be same. ठीक है? Earth is there also, and Earth is here also. The presence of sun is here also, presence of sun is there also. So overall, what I'm trying to explain here is the physical geography has been divided into two parts: the world geography and the Indian geography, or India's geography. So what should be the ways? The way should be, तरीका क्या होना चाहिए? पहले आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म करनी चाहिए, ठीक है, एंड देन जम्प्स ऑन द इंडियन ज्योग्राफी. बिकॉज द मोमेंट यू कंप्लीट द वर्ल्ड ज्योग्राफी, उस टाइप क्या होता है, द मोमेंट यू कंप्लीट द वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके बाद क्या कर रहे हो आप? नाउ यू आर जंपिंग ऑन द कॉन्सेप्ट्स. ठीक है ना? ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ द वर्ल्ड ज्योग्राफी, व्हेन यू आर कंप्लीटिंग द वर्ल्ड ज्योग्राफी, देन एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो कवरिंग ऑल सॉर्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट. उसके बाद इफ यू कम ऑन द इंडियन ज्योग्राफी, जब आप इंडियन ज्योग्राफी में आते हो, तब क्या होता है? एट दैट टाइम इट बिकम इजी फॉर यू टू कंप्लीट द थिंग्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इंडियन ज्योग्राफी. तो इंडियन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को कवर करना इजी हो जाता है. क्लियर होगी बात? हम्म. So this is what you need to understand from the point of view of the physical geography. Clear? Now, now let us talk about how many points are there, or how many topics are there in the section of the physical geography. So the first topic that we have in the section of physical geography is Earth, solar system, okay, and universe. Earth, solar system, and universe. Now, before beginning anything, let me confirm one more thing to you. How we gonna study here, and how the things will become a cakewalk for you. तुम्हारे लिए चीजें कैसे आसान बन जाएंगी, चीजें आपके लिए कैसे आसान बन जाएंगी, उसको समझते हैं. पहला यहाँ पे है फिजिकल ज्योग्राफी. Okay, now I think everything is okay. Hmm? Everything is okay now. Okay, now I think everything is okay. ठीक है. So what I was saying कि along with this physical geography, ठीक है, most of the questions are they are coming from the section of the mapping, from the section of the mapping. So I will cover this mapping part too. So for example, drainage system and many other things will be covered from this mapping part too. ठीक है. So let me first, in the very beginning, let me clear it from my side.
So what are the things that will cover from this section? Let me define it for you. So we'll study physical geography, from where the maximum question have been asked. In addition to that, we'll study the mapping part. Now, from this mapping part, we'll study about the whole drainage system of India. So definitely, it is very much difficult to remember all the drainage system or all the rivers that are there in India, all the dams that are there in India. So we'll understand the drainage system, drainage system. ठीक है? We'll understand the drainage system. We'll understand the national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, tiger reserves. Okay, and Ramsar sites. These things we'll study from here. Third things, important places, important places that are there at a particular state. These things we'll study. Fourth, and here also tiger reserves and uh, elephant reserves too. Elephant important places. Okay. Then drainage system. In the drainage system, we'll talk about rivers, tributaries, distributaries. These things we'll talk about, है ना? Rivers, tributary, distributaries. यहाँ पर सब बात करेंगे. And then overall we'll talk about Ramsar site हो गया. ठीक है. The types of the soil at a particular state, cultivation, mountain ranges. So first, fifth is the mountain ranges. So all these things, if you study separately, it will become very difficult for you. It will become very challenging for you if you're going to watch these things, if you're going to study these things separately. But here I'm going to tell you, I'm going to explain you each and everything in detailed manner. Will be then the things will become a cakewalk for you. Now let me give you a very short idea that how we'll cover the section of this mapping. Clear? So this is a glimpse, this is a glimpse of overall the mapping section. So for example, this is all the glimpse of the mapping section and how many things we're going to cover from the same. So overall, for example, this is so here, these are the things that we'll cover. So for example, we will cover, for example, we'll cover the things like the state boundaries will cover, drainage system will cover. Okay, we'll cover the rivers, tributaries, and distributaries. What is the difference between the tributary and distributary? Tributaries is something which gives the water to a particular river, and distributary is something which takes the water away from the river. Then we'll talk about the national parks, biosphere reserve, tiger reserve, wildlife sanctuary, and overall we'll talk about overall the direction of the river, in which direction the river is moving. We'll talk about that which is the right bank tributary of the river and which is the left bank tributary of the river. So left, right, north, south things we'll talk about. Elephant reserves, forest. At a particular point, what kind of the forest is there, and in that forest, what kinds of animals we found. We'll talk about it. We'll talk about the soil. We'll talk about the topography. Topography means how much land is elevated at a particular point and how much land is lower at particular point. This is known as the topography. These things we'll talk about. And next we'll talk about the important towns on the river bank. So on the particular river bank, what are the important towns that are there? Important towns. That is what important cities I have talked about. Okay, na? And then we'll talk about the different corridors. So what is the meaning of this different corridors? The different corridor means, for example, let's say for example, here is the area of the elephant, and this is also the area of the elephant. So we'll make a corridor. So from which these two area get connected. These two area get connected. Okay, and this is known as the different corridors. Next, wildlife species. Wildlife species, for example, flora and fauna, and their IUCD status. So at a particular point, what kind of the flora is there? What kind of the fauna is there? What is the meaning of flora? Flora means plant, and fauna means the animal. So at a particular point, किस तरह के एनिमल्स है, किस तरह के प्लांट है वहां पर, उसके बारे में बात करेंगे. एंड देन विल टॉक अबाउट द माउंटेन रेंजेस, जो भी वहां पर इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं. इतनी सारी चीजों की बात करेंगे हम अपने इस मैपिंग सेक्शन में. दिस इज फॉर एग्जांपल स्टेट वाइज मैपिंग. दिस इज JNK. ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश. ठीक है, दिस इज द पंजाब, and then Haryana, and then comes the Rajasthan, and this is the very beautiful map of the mainland India. So in this way, we'll cover each and every topic. In this way, we'll cover each and every topic
which will be very much interesting and very much helpful for you. Otherwise, if you cover these things separately, it will take you time and it is very difficult to memorize these things. Clear? So this mapping section will do along with the syllabus of the geography. ठीक है ना? And in addition to that, for example, if I talk about Sikkim, so do I have the Sikkim map right now? Mhm. Okay, we have the Arunachal map. For example, this is the Arunachal map. So here you may see the complete mapping of the Arunachal. So overall, how many districts are there? ठीक है ना? And overall, the formation of the Arunachal we'll talk about. ठीक है? Mapping series में. So kind of the Himalaya that is there in the Arunachal. ठीक है? Kind of the passes that are in Arunachal, rivers that are there in the Arunachal. ठीक है? Climate and agriculture of the Arunachal. National parks, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve of Arunachal, and overall art and culture of Arunachal. है ना? So in this way, dances, they will talk about each and you know, time the tribes that are there, Nishi tribes, the largest tribe of the Arunachal, and Apadani tribe. So in this way, we'll talk about each and everything about that particular state, which will be very much comprehensive and very much uh, interesting. In this way, सिक्किम का भी है, सबका भी है हमारे पास. ठीक है? This is of Sikkim. So overall, how this state came into the power or came into being, we'll talk about. ठीक है ना? We'll talk about Lepchas and many other things. We'll talk about history of the Sikkim. ठीक है? बहुत सारी चीजें, art and culture of the Sikkim. So these things we'll talk about. Means mapping will be there, and this mapping will going to help you to have a complete picture, of the geography. ठीक है? To have the complete picture of geography. Now let us have glance over it or what we were discussing. So in the section of the physical geography, so what we'll cover? We'll cover this physical geography. We'll cover this physical geography. In addition to the physical geography, we'll cover the mapping part too. We'll cover the mapping part too. Now first comes what I told you: Earth, solar system, and the universe. This is what we'll discuss. Next thing we'll discuss about the geomorphology. Geomorphology is also there in the syllabus. Third thing that is there is climatology. Climatology. Fourth thing that we'll discuss is oceanography. Oceanography. Fifth topic is there, that is the biogeography. ठीक है? So these are the things, or this is the overall syllabus of the physical geography. Or physical geography of what? Physical geography of the world. So right now we're talking about the physical geography of the world. This is the syllabus. Now here in the section of the earth and solar system, है ना? अब यहाँ पर भी क्या है? Here we have the detailings. So first let me give you the brief of everything. एक ब्रीफ समझते हैं कि क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, सिलेबस के अंदर, उस चीजों को समझते हैं, उस पर प्रकाश डालते हैं. सो फर्स्ट जैसे पहले है अर्थ, तो यहाँ पर हम बात करेंगे ओवरऑल, विल टॉक अबाउट ओवरऑल द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ. ठीक है ना? विल टॉक अबाउट दी, फॉर एग्जाम्पल विल टॉक अबाउट दी लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड्स. ठीक है ना? व्हाट आर मीनिंग ऑफ लैटिट्यूड, व्हाट आर मीनिंग ऑफ लॉन्जिट्यूड्स. ठीक है ना? ओवरऑल व्हाट इज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द अर्थ, विल टॉक अबाउट. ठीक है कि अर्थ की रिलेटिव पोजीशन क्या है. सो फॉर एग्जाम्पल विल टॉक अबाउट कि अर्थ जो है वो इंक्लाइंड है 23.5. So why it is inclined? What are the imaginary lines that are passing through the earth? So earth से जो imaginary line pass कर रही हैं, latitude and longitudes. What are these things? ये सारी चीजें बात करेंगे यहाँ पर, अर्थ के बारे में यहाँ पर बात करेंगे. ठीक है ना? We'll talk about, for example, rotation and revolution of the earth. ठीक है ना? We'll talk about rotation and revolution of the earth, or what happens when the earth revolves, and what happens when the earth uh, rotate. So what is the difference between the rotation and the revolution, and what are the significant changes that are there? Okay, so this is what you need to know: rotation and revolution. Next, overall, for example, from the rotation of the earth, what is happening? From the rotation of the earth, the day and nights are happening. And from the revolution of the earth, what is happening? The change in seasons. ठीक, तो चेंज इन सीजन किसकी वजह से होता है? इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन, नॉट बिकॉज ऑफ द रोटेशन. बिकॉज ऑफ रोटेशन, डे एंड नाइट हैपन. Then we'll understand in the section of the
this, I'm just talking about this thing abhi. Right now I'm just talking about the earth, in the earth. Then I will talk about, yeah, here I will talk about, basically we'll talk about the time zone, that how overall the time zone has been divided, है how many time zones we have. Then you will talk about there are 24 time zones. India has been divided into, or world has been divided into 24 time zone, in 24 time zone. This is what you need to understand. ठीक है ना, international dateline, the concept of the international datelines. ठीक है ना, which dateline passes through India, which meridian passes through India, or international dateline. For example, we are 5.5 hour ahead of the prime meridian. So prime meridian जो है, that is the longest longitude. उससे हम लोग 5.5 घंटे आगे हैं. ठीक है ना, 5.5 घंटे आगे हैं. सो दीज थिंग्स विल टॉक अबाउट इन दीज क्लासेस. इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे. ठीक है. नाउ अब बात करते हैं. सो ये राइट. ठीक है, तो ये हो गया अर्थ के बारे में. ठीक है ना, और बहुत सारी चीजें हैं. फॉर एग्जाम्पल विल टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ, यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट इज द सोलार सिस्टम. सोलार सिस्टम. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोलार सिस्टम. यहाँ पर यू विल टॉक अबाउट ओवरऑल द पोजीशनिंग ऑफ द प्लैनेट्स. फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अर्थ, है ना, तो वी नो, फॉर एग्जांपल दिस इज सन. इफ दिस इज सन, दिस इज सन. ठीक. इन दिस केस दिस इज मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. तो पहले आता है मर्करी, फिर वीनस, फिर थर्ड पे आता है अर्थ. तो ये जो पोजीशंस है, रिलेटिव पोजीशन, दीज आर द पोजीशन दैट यू नीड टू रिमेंबर. इन पोजीशंस को आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है ना, दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. ठीक है ना, इन द सेक्शन ऑफ द सोलर सिस्टम. इनकी पोजीशन, विच प्लैनेट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट. Even though the, for example, Mercury is the closest to Sun, but it is not the hottest one. Then who's the hottest? Venus is the hottest. In this way, you will remember the things. ठीक है ना? So Mercury, Venus, Earth, then Mars, Jupiter, Saturn, Uranus और Neptune. Which planet has rings? किस planet के ring हैं? किस planet के rings नहीं हैं? ठीक है ना? कौन से जो inner planets होते हैं? Inner, अंदर की planet. Mercury, Venus, Earth, Mars. ये क्या है? ये रॉकी planets हैं, यानी कि solid planets हैं. बाहर वाले जो होते हैं वो गैसियस होते हैं. ठीक है, तो क्यों होते हैं इसके बारे में जानकारी दी जाएगा. वाई दे आर द गैसियस प्लैनेट, वाई दे आर नॉट द रॉकी प्लैनेट्स. ठीक है, विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स ऑल्सो. ठीक. और क्या बात करेंगे यहाँ पर. हाँ, टाइम पीरियड किसका क्या है, और नेचुरल सैटेलाइट्स के बारे में बात किया करेंगे. विल टॉक अबाउट द सैटेलाइट. सैटेलाइट्स क्या होती है, कि कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बैठा यहाँ पे, अब मेरे अराउंड ये पेन घूम रहा है, तो दिस पेन बिकम अ सैटेलाइट फॉर मी. तो कोई भी चीज किसी के अराउंड घूमती है उसको सैटेलाइट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल अर्थ के किनारे, अर्थ, ये अर्थ है फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अर्थ. अब अर्थ के चारों ओर मून घूम रहा है, तो मून क्या हो गया, हमारा सैटेलाइट है. बट मून इज रिवॉल्विंग देयर नेचुरली, कोई आर्टिफिशियली तो नहीं भेजा गया है. इसी वजह से मून को क्या बोलते हैं, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ इंडिया. इंडिया कैसा सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है. मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ इंडिया. इंडिया का नेचुरल सैटेलाइट है. क्लियर होगी बात. ठीक है, सो मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ इंडिया. सो दिस इज अबाउट द सोलर सिस्टम. ठीक है ना. देन विल टॉक अबाउट द यूनिवर्स. कि यूनिवर्स में, फॉर एग्जांपल, यूनिवर्स इज वेरी बिग, एंड ओवरऑल हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन द यूनिवर्स. ठीक है ना. एंड देन विल टॉक अबाउट द, फॉर एग्जांपल, इन द सेक्शन ऑफ यूनिवर्स विल टॉक अबाउट द गैलेक्सी. व्हाट इज द नेम ऑफ द गैलेक्सी दैट वी आर लिविंग इन, दैट इज द मिल्की वे, इज द गैलेक्सी दैट वी आर लिविंग इन. मिल्की वे गैलेक्सी का नाम जहां पर हम रह रहे हैं. ठीक है. देन which galaxies are पड़ोसी galaxy, neighboring galaxy. Then that neighboring galaxy is the Andromeda. Why Milky Way is called as the Milky Way? What is the shape of this Milky Way? Shape क्या है इसका, स्पाइरल शेप है. कैसा शेप है, स्पाइरल शेप है. ये इलिप्टिकल शेप है, कैसा शेप है. सो देन विल आंसर इट इज एन इलिप्टिकल शेप, स्पाइरल नहीं है. इस तरह की चीजों का आंसर यहाँ पर दिया जाएगा यूनिवर्स के बारे में. नाउ इन द सेक्शन ऑफ यूनिवर्स विल आल्सो टॉक अबाउट दी दैट यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग. यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपैंडिंग कर रहा है. कैसे पता, फ्रॉम द, देन विल टॉक अबाउट द रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट. तो रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट से हमें पता लगाएंगे कि जो यूनिवर्स है वो क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है. तो रेड शिफ्ट से अगर कोई चीज रेड है तो वो दूर जा रही है, ब्लू है पास आ रही है. इस तरह से चीजों से एक्सप्लेन करेंगे हम. नेक्स्ट कम था जियोमॉर्फोलॉजी. तो ये क्या हो गया, दिस इज द अर्थ, सोलर सिस्टम एंड यूनिवर्स. दूसरा जो टॉपिक है हमारा कहां पर, फिजिकल ज्योग्राफी में. फिजिकल ज्योग्राफी में, वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी में, इफ यू अंडरस्टैंड द फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड कंप्लीटली, इफ यू अंडरस्टूड,
चलो फिर से आ गया, कुछ थोड़ा सा समस्या है, कोई बात नहीं। ठीक है, दिस इज द अबाउट द अर्थ, सोलर सिस्टम, है ना, ब्लू शिफ्ट, रेड शिफ्ट, ये सारी चीजें यहाँ पर बात कर चुके हैं हम। क्लियर हो गई इतनी? ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी, एज आई टोल्ड यू, द मीनिंग ऑफ जियो इज अर्थ, एंड मॉर्फ मिस क्या होता है, नेक्स्ट इज मॉर्फ एंड नेक्स्ट इज लॉजी। थ्री वर्ड्स आर देयर। फर्स्ट इज जियो, लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ जियो। जियो मिस आई टोल्ड यू अबाउट द अर्थ, morph is meaning the form, and logy means the study. So what we are going to do, we are going to study the forms of the earth, that overall what is the shape of the earth and how it has been formed, and we're going to study about these things, इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं. So this is about the geomorphology, this is about the geomorphology. ठीक है ना. So in the geomorphology we'll understand lot of the things. For example, we'll understand in the section of geomorphology, if I talk about the geomorphology, ठीक है. So we'll understand lot of the things. For example, ठीक है. So in the section of geomorphology, ठीक है ना, we'll cover the section that overall, for example, how the landforms have been formed, how the landforms have been formed, landforms बने कैसे हैं, this will talk about it. ठीक है ना. For example, how the continent that we call as the India, how this India continent has been made. Was this Indian continent was always there, क्या ये इंडिया का जो कॉन्टिनेंट है ये हमेशा यहाँ पे था, ये अभी यहाँ पे आया है. देन विल स्टडी फॉर एग्जांपल दिस इज यूरेशियन प्लेट, है ना, यूरेशियन प्लेट था और यहाँ पर ये इंडियन प्लेट था, एंड दिस इंडियन प्लेट वाज कमिंग क्लोज टू द यूरेशियन प्लेट, एंड देन ओवरऑल द फॉर्मेशन ऑफ द लैंड दैट हैपेंड देयर. ठीक है. सो हम बात करेंगे इसके बारे में, लैंड फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे. देन यहाँ पर इस इन द सेक्शन ऑफ लैंड फॉर्म्स विल टॉक अबाउट वेरियस थ्योरी. फॉर एग्जांपल सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक है ना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. तो इस तरह की कई सारी चीजों के बारे में बात करेंगे. देन द जियोमॉर्फोलॉजी, आपको पता है, विल टॉक अबाउट द वोल्केनिज्म. वोल्केनिज्म सो होता क्या बेसिकली, अर्थ का एक ही सीन है कि इनसाइड द अर्थ थिंग्स आर वेरी मच हॉट इन नेचर. अर्थ के अंदर जो चीजें हैं बहुत ज्यादा गर्म है. क्यों गर्म है? एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर ये अर्थ है, सो जैसे ही आप अर्थ के ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी, तीन चीजें हैं मेन. यहाँ पर भी टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी. एज यू गो अबव द अर्थ तो ये सारी चीजें क्या होती, कम हो जाती हैं, और एज यू गो इनसाइड द अर्थ ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं. इन अ वेरी शॉर्ट क्रिस्प मैनर आई एम टेलिंग यू, बहुत संक्षेप में आपको बता रहा हूँ, बहुत समराइज्ड वे में बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है. ठीक है. तो जैसे ही आप अर्थ से नीचे जाएंगे तो ये सारी चीजें क्या होंगी, घट जाएंगी, टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी. और जैसे ही अर्थ के ऊपर जाएंगी ये सारी चीजें क्या होंगी, ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी. क्लियर ना. सो अर्थ के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसी वजह से सारी चीजें जो होती हैं वो मोल्टेन स्टेट में होती हैं, मोल्टेन स्टेट में. और यू मे कॉल दिस एज द लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट. ठीक है. सो मेटल, वो होता क्या है, ये मेटल होता है, मेटल, मेटल होती हैं, गैसेस होती है, बहुत सारी चीजें होती है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. सो व्हेन दीज मॉल्टन मटेरियल गेट एनी स्पेस, इसको जैसे स्पेस मिलता है बाहर निकलने के लिए, तो स्पेस से बाहर निकलता है, और इसी को बोलते हैं हम लोग वोल्केनिज्म या वोल्केनिक इरप्शन. सो विल टॉक अबाउट द वोल्केनिक इरप्शन. यहाँ पर विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लावा एंड मैग्मा. ठीक. और यही वोल्केनिक इरप्शन जब ठंडा हो जाएगा तब ये क्या फॉर्मेशन करेगा, देन फ्रॉम हियर ओनली विल स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स. ठीक है ना. देन विल स्टडी फॉर एग्जांपल थ्री टाइप्स ऑफ द रॉक्स विल स्टडी, है ना, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक और ना इग्नियस रॉक्स. दीज थ्री टाइप्स ऑफ द रॉक्स विल टॉक अबाउट. इन तीन तरह की रॉक के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे. ठीक है ना. सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस, ये तीन तरह के यहाँ पे रॉक के बारे में हम बात करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बात करेंगे, लेट्स से इरोजन की बात करेंगे, इरोजन की बात करेंगे, विदरिंग की बात करेंगे, विदरिंग. ठीक. एंड देन विल ओवरऑल फॉर्म अबाउट टॉक अबाउट वही कि वही जब लैंड फॉर्म के बारे में बात करेंगे, देन विल टॉक अबाउट ओवरऑल दैट हाउ दिस अर्थ दैट इज देयर,
और द वर्ल्ड दैट इज देयर, जो इसका जो मैप है ओवरऑल, ये कैसे इस शेप में आया, ये हमेशा से ऐसे नहीं था। तो पैंजिया के कॉन्सेप्ट और सारी चीजों के बारे में मैं बात करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया, हमारा दिस इज अबाउट द जियोमॉर्फोलॉजी। देन कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी, ठीक है, ये कहाँ पे, ये वाला टॉपिक। ठीक है, फर्स्ट इज, ये बात कर लिया, ये बात कर लिया, क्लाइमेटोलॉजी बात कर लिया। सॉरी, पहले बात करते हैं क्लाइमेटोलॉजी के बारे में, ठीक है ना, क्लाइमेटोलॉजी पहले बात करते हैं। क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी क्या है, क्लाइमेट के बारे में बात करना, ठीक है ना। क्लाइमेटोलॉजी मतलब क्या होता है, क्लाइमेट के बारे में बात करना। इसमें क्या है, ओवरऑल जैसे मैंने बताया, ठीक है ना, क्या बताया मैंने आपको, कि जैसे ही आप अर्थ के ऊपर जाते हो तो टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी घट जाती है, और जैसे ही आप अर्थ के नीचे जाते हो टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी सब क्या हो जाती है, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं, ठीक है ना, वो सारी चीजें बढ़ जाती हैं। इन द सेम एज यू गो अप ऑफ द अर्थ, ओवरऑल द टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी विल डिक्रीज, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम करते हैं क्लाइमेटोलॉजी में, क्लाइमेटोलॉजी में हम क्या समझते हैं, हम समझते हैं ओवरऑल अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, यानी कि अर्थ का जो, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर है, उसके बारे में हम बात करते हैं, टॉक अबाउट द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ठीक, कि ओवरऑल जो सा हमारा जो स्लिप वो है, एटमॉस्फेयर है, तो कैसे रुका हुआ है यहाँ पर, जैसे अर्थ है, तो अर्थ में ये एटमॉस्फेयर जो है यहाँ पर कैसे रुका हुआ है, ये भाग क्यों नहीं जा रहा है यहाँ से। भाई ऊपर तो पूरा स्पेस है ना, पूरा खाली है, भाई देखा जाए ये अर्थ है ऐसे पूरा, ऊपर तो पूरा स्पेस है, पूरा खाली है बड़ा सा, तो ये भाग क्यों नहीं रहा है, ये रुका क्यों ऐसे वहां पे। सो विल टॉक अबाउट इट, एंड देयर विल अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द ग्रेविटी देयर, ग्रेविटी का क्या रोल है ना, क्यों भाग नहीं रहा है ओवरऑल। ठीक है ना, यहाँ पर हम बात करेंगे ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, है ना, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, और यही स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन यहाँ भी पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी में। ठीक है ना, स्ट्रक्चर, किस चीज का स्ट्रक्चर यहाँ पढ़ेंगे, ओवरऑल अर्थ का स्ट्रक्चर, कि अर्थ बना किस चीज से है, अर्थ के अंदर अगर हम ड्रिल करेंगे तो वो कहाँ तक जाएगा, अभी तक लार्जेस्ट ड्रिल कहाँ तक की गई है, द मैक्सिमम ड्रिल दैट वी हैव डन इज अप टू व्हाट हाइट, अप टू व्हाट डिस्टेंस, वेयर वी हैव डन द ड्रिलिंग, एंड इफ वी आर ड्रिलिंग, ठीक है ना, देन व्हाट वी विल फाउंड। ठीक है, सो दीज थिंग्स ओवरऑल विल बी एड्रेस्ड इन सेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। ठीक है, next overall in the climatology, है ना, we'll talk about the that role of the temperature. So next thing we'll talk about, for example, role of the temperature in the precipitation. तो precipitation में, precipitation मतलब क्या होता है, precipitation मतलब क्या होता है, वर्षा, रेन। सो रेन में टेम्परेचर का क्या यूज है ना, we'll understand that how the formation of rain happen and what is the use of the temperature in the same, टेम्परेचर का यूज उसमें क्या है, विल अंडरस्टैंड द सेम थिंग। ठीक है, सेम थिंग। सो क्या है, वैसे सिंपल सी बात है, अगर पानी यहाँ पे हॉट है, देयर इज हॉट वाटर, हॉट वाटर, इन दैट कंडीशन इफ द वाटर इज वेरी मच हॉट, इन दैट कंडीशन दिस वाटर विल evaporate and this will trigger the formation of the cloud, and hence it leads to the fall of the precipitation or generation of the precipitation. We'll talk about it. ठीक है, तो overall we'll talk about the precipitation, here we'll talk about the hydrological cycle we'll talk about। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इफ आई ड्रॉ सर्कल, so there are three things, first is the this is the, for example, this is the hydrosphere, this is the your let's say atmosphere, this is your lithosphere, ठीक, and this part which is here, this part is, this black part is known as the, your biosphere. So what is the biosphere, biosphere is the combination of the hydrosphere, atmosphere and lithosphere। ठीक है ना, lithosphere for example, this lithosphere comes in the section of भाई जियोमॉर्फोलॉजी, इसमें आ रहा है जियोमॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, बायोस्फीयर, तो एटमॉस्फेयर इज क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोस्फीयर इज योर नो नो एटमॉस्फेयर, हाँ ठीक है, atmosphere and this, they both will come in the climatology only, ठीक है, and then we have the biosphere। So this is what you understood is the definition of the
definition of the biosphere also. This is what you understood. Definition of the biosphere. ठीक है? Clear? So this is about the climatology. This is about the climatology. So overall, you will understand the atmospheric disturbance, and in the section of the climatology, atmospheric disturbance, building of the climate, है ना, tornadoes, volcanoes, ठीक है ना, ये सारी चीजें यहाँ पर बात करेंगे. Third things you may call about air masses, air masses, इस तरह की चीजें यहाँ पर बात करेंगे. ठीक है, दिस इज द ओनली थिंग वी हैव इन द सेक्शन ऑफ द क्लाइमेटोलॉजी. थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? सो थर्ड इज द ओशियनोग्राफी. ओशियनोग्राफी. नेक्स्ट पॉइंट, oceanography. What is the meaning of oceanography? It is related to the ocean study. So here you will study, for example, by the same thing, temperature. ठीक है ना? Overall, the water flows from the higher temperature to lower temperature. Whether it is pressure or anything will always flow from the higher temperature to lower, higher to lower. Whether it is pressure, whether it is temperature, will always flow from high to low. Will always flow from high to low. ठीक है? That is what you need to understand. In the case of the oceans, if the water is flowing from the higher temperature to lower temperature, and even if I just say if the water is flowing, so this is the water which is flowing. The flowing of the water is considered as the current in geography. Current. ठीक है? Current. So here you will understand what is the difference between the warm and the cold oceans currents. ठीक है ना? And overall, for example, the mixing point of the warm and cold ocean current is very good for the fish cultivation. Fish cultivation. ठीक है ना? या पेसी कल्चर बोल देते हैं इसको. पेसी कल्चर. ठीक, इसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है. तो इस तरह की चीजें ओशनोग्राफी में हम पढ़ेंगे. ठीक है ना? ठीक है. Here we'll understand overall the currents. So this is the first thing that we will study about the water currents. Next thing we'll study about the tides. Tides है ना? तो यहाँ पर बात करेंगे टाइड्स में ebb और फ्लो की. विल टॉक अबाउट ebb एंड फ्लो. ebb मीन्स क्या होता है? व्हेन द वाटर गोज डाउन और गोज बैक, है ना, ऑन द सी शोर. अगर समुद्र तल पे पानी पीछे जा रहा है तो उसको बोलते हैं ebb, और पानी अगर आगे जा रहा है तो उसको बोलते हैं फ्लो. ठीक है. देन विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द एल नीनो एंड ला नीना. दिस इज व्हाट विल अंडरस्टूड. एंड विल अंडरस्टूड कि इंडिया के लिए कौन सा अच्छा है, एल नीनो की ला नीना. एल नीनो में क्या होता है? एल नीनो में वर्षा कम होती है तो देयर इज लेस प्रेसिपिटेशन. ला नीना में ज्यादा प्रेसिपिटेशन होता है. देन विच वन इज गुड फॉर us and which one is not? We'll talk about, for example, fourth point, the salinity of water. Salinity of water. ठीक है ना? और या फिर सिंपल सी मैं अगर बात करूं इसको, तो वाटर जो है, वाटर से रिलेटेड कितनी चीजें हो सकती हैं स्पेसिफिक, है ना? विल टॉक अबाउट द सैलिनिटी, विल टॉक अबाउट द टेम्परेचर, विल टॉक अबाउट द प्रेशर, विल टॉक अबाउट द पॉल्यूशन. जितनी भी चीजें हो सकती हैं, विल टॉक अबाउट द सेम थिंग्स इन द सेक्शन ऑफ दिस ओनली. ठीक है ना? विल टॉक अबाउट द ट्रेंचेस, है ना, मरियाना ट्रेंच कहाँ पे है, ये सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे. ठीक है. विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स हियर. सो दिस इज अबाउट द ओशियनोग्राफी. ओशियनोग्राफी, ओशियंस के रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे. ऑन शोर एंड ऑफ शोर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑन शोर ऑयल रिग एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑफ शोर ऑयल रिग. इसके बारे में हम बात करेंगे. विल टॉक अबाउट दिस ऑल्सो. ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे. तो ये सारी चीजों के बारे में यहाँ बात की जाएगा ओशियनोग्राफी में. ये भी हो गया. उसके बाद बायोजियोग्राफी, लास्ट पॉइंट हमारा बायोजियोग्राफी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोजियोग्राफी? ठीक है ना? बायोजियोग्राफी, बायोजियोग्राफी में क्या है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से लेके, एक पर्टिकुलर पॉइंट से लेके, मतलब बायो से एक ज्योग्राफी कैसे अफेक्ट होती है. मतलब बायोजियोग्राफी में क्या है, जो बायोलॉजिकल फिनोमेनाज होते हैं उससे ज्योग्राफी कैसे अफेक्ट. फॉर एग्जांपल लेट्स से एक हमारे पास ये हिल है. इस हिल में क्या है, मॉइस्चर आ गया कहीं से, मॉइस्चर. बिकॉज ऑफ दैट मॉइस्चर क्या हो गया, यहाँ पे प्लांट उगने लगा, प्लांट उगने लगा ऐसे ऐसे करके. उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर इस रॉक में क्रैक आ गया. देयर इज अ क्रैक इन द रॉक, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये रॉक खराब हो गई. So now what is happening? Because of some biological phenomena,
बिकॉज ऑफ सम बायोलॉजिकल फिनोमेना क्या हो रहा है कि हमारी जो जियोग्राफी है वो क्या हो रही है, जियोग्राफी है वो प्रभावित हो रही है, चेंज हो रही है। और फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा कोरल्स के बारे में, कोरल सी, कोरल सी, ठीक है ना, कोरल्स के बारे में बात सुना, पॉलिप्स, ठीक है ना, पॉलिप्स के बारे में सुना होगा, ठीक है ना। अभी क्या है, कोरल्स पॉलिप्स फॉर एग्जाम्पल लार्जेस्ट कोरल रीफ जो अफ्रीका का नॉर्थ ईस्टर्न साइड है, वहां पर आपको लार्जेस्ट लार्जेस्ट पॉलिप्स मिलेंगे, है ना, पॉलिप्स वो मिलेंगे, कोरल्स मिलेंगे, ठीक है ना, कोरल रीफ है। सो वो कैसे बनी, तो वहां पर क्या है, ना ज्योग्राफी इज देयर एंड ज्योग्राफी इज अफेक्टेड बाय द बायोलॉजी, ठीक है। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर हम इस चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नाउ अब हम मैं चाहता हूं कि इफ योर कमेंट, कोई आपका वैल्यूएबल कमेंट्स है तो उसके बारे में भी हम हमें बताएं। इफ यू हैव एनी डाउट और एनीथिंग एल्स यू मे टॉक टू अस। कोई डाउट है, कुछ चीज पूछनी है आपको, देन यू मे आस्क। सो क्या क्या बारे में बात किया हमने आपसे, एंड आई विल गिव यू द कंप्लीट नोट्स ऑफ मैपिंग एंड दिस ज्योग्राफी आल्सो, यू डोंट नीड टू रश एनीवेयर एल्स, you don't need to rush anywhere else, ठीक है। in addition to that I'll tell you some magazines, so in your free time you may go and watch these things, will be very much beneficial for you। so अभी मैंने क्या बताया आपको, अभी अच्छा एक अभी इंडियन ज्योग्राफी बचा हुआ है, उसको हम कल एड्रेस कर लेंगे, मेन मेन अभी यहीं पर है, ठीक है ना। दिस इज द मेन थिंग दैट वी हैव, क्लियर ना। अभी हमने क्या बात की, फिजिकल ज्योग्राफी, दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट फिजिकल ज्योग्राफी। इन द सेक्शन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी हमने कहा पहले वर्ल्ड की ज्योग्राफी करेंगे, देन वी टॉक अबाउट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। मोस्टली मोस्ट ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया विल बी कवर्ड फ्रॉम द मैपिंग सेक्शन दैट वी हैव, जो मैंने आपको दिखाया मैपिंग्स। और हाँ, आई एम प्रॉमिसिंग यू कि अरुणाचल और सिक्किम, क्योंकि दो स्टेट्स के लिए स्पेसिफिक बैच है, अरुणाचल और सिक्किम के लिए बढ़िया सा, जो मैंने भी दिखाई है आपको पीपीटी, आपने देखी होगी, वो पीपीटीज आपको दूंगा, मतलब कि आपके नोट्स आपको दूंगा, प्रोवाइड करूंगा, पर्टिकुलर ऑफ दैट स्टेट, ठीक है ना। अभी फिर से दिखा दूं मैं आपको, अगर आप भूल गए हो, ठीक है, कि मैपिंग हमारी कैसी थी एंड ओवरऑल व्हाट वर द थिंग्स। सो दिस वाज फॉर द स्टेट ऑफ अरुणाचल। तो एक एक चीज वहां पे रहेगी, ईच एंड एवरीथिंग विल बी देयर इन अ डिटेल्ड मैनर, वहां पर चीजें रहेंगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। जैसे मैंने ये बताया, अरुणाचल के डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, एंड इनर लाइन परमिट का क्या सीन है वहां का, है ना, एंड कितने राज्यसभा की सीट्स हैं, कितनी लोकसभा की सीट्स हैं, व्हाट काइंड ऑफ द ओवरऑल हम कल्टीवेशन कैसे करेंगे, वो सारी चीजें वहां पर, ठीक है। और पासेस इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, रिवर्स कौन कौन सी हैं। सो 100% every time you this thing in the mapping section, now the trend has been that overall questions will be asked from that zone where the whatever place is in news. The place in news is something which is very important and we'll cover the same things, we'll cover the same। इस तरह से हर एक चीज को यहाँ पे कवर करेंगे। लेट मी फर्स्ट अभी रिवाइज करने दो क्या क्या चीजें बात कर चुके हैं। तो अभी बात करें फिजिकल ज्योग्राफी में, मैंने कहा था कि वर्ल्ड की समझ लो, इंडिया कितने समझ में आ जाएगी, और मैपिंग से समझ लेंगे हम लोग। फिर हमने बात किया अर्थ के, फिर हमने बात किया किसके, अर्थ के सोलर सिस्टम के बारे में बात किया, ठीक है। तो हमने बात किया अर्थ अर्थ के बारे में बात किया, सोलर सिस्टम के बारे में, यूनिवर्स के बारे में बात किया। नेक्स्ट हमने बात की जियोमॉर्फोलॉजी में, हमने जियोमॉर्फोलॉजी के कई सारे कॉन्सेप्ट उसके बारे में बात किया कि ओवरऑल हिमालय कैसे बनते हैं, ओवरऑल ये सारी चीजें कैसे बनती हैं, है ना, माउंटेन्स कैसे बनते हैं, ओवरऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीफ फीचर्स। अगर अरावली, जिसके बारे में आजकल इतनी बात हो रही है कि वी नीड टू सेव द अरावली बिकॉज गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू कट दीज अरावली, तो बेसिकली अगर हम उसको सेव कर रहे हैं, ठीक है ना, इफ वी आर सेविंग द अरावली, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इट, व्हाई, बिकॉज ऑफ अरावली राजस्थान में वर्षा क्यों नहीं होती है, राजस्थान में रेन क्यों नहीं होती, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अरावली। कारण क्या है उसका, क्लाइमेटोलॉजी हमने बारे में बात किया, ओशियोग्राफी, बायोजियोग्राफी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने बात किया, क्या बात किया, हमने बात किया कि जियोमॉर्फोलॉजी में वोल्केनिज्म के बारे में बात किया, लावा मैग्मा के बारे में बात किया, रॉक कैसे बनती है, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है, मेटामॉर्फिक इग्नियस रॉक क्या होती है, इसके बारे में सीखेंगे हम, इरोजन क्या होता है, वेदरिंग क्या होता है ना, वर्ल्ड और इंडिया के मैप के बारे में बात की। क्लाइमेटोलॉजी में बताया कि जैसे जैसे अर्थ के आप ऊपर जाएंगे तो आपका टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी घट जाती है, अर्थ के नीचे ये बढ़ जाती है, स्ट्रक्चर के बारे में, प्रेसिपिटेशन, रेन, हाइड्रोलॉजी, एयर मासेस, ये क्लाइमेटोलॉजी में बात किया। ओशियनोग्राफी में मैंने बताया कि जो पानी जब मूव करता है तो उसको बोलते हैं करंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वार्म ओशन करंट, कोल्ड ओशन करंट के बारे में सीखेंगे, टाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, एल नीनो लानिना के बारे में पढ़ेंगे, वाटर्स के जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ऑयल रिग्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और बायोजियोग्राफी में ज्योग्राफी का बायोसिक रिलेशन उसके बारे में पढ़ेंगे। सो आई होप मैंने आपकी चीजों को बहुत अच्छे से एड्रेस किया है, हर एक चीज आपको नोट्स वाइज मिलेगी, और सबसे ज्यादा आपको जो पसंद आने वाला है और सबसे ज्यादा नंबर भी जहां से आने वाले हैं वो है आपका मैपिंग सेक्शन। अभी मैं अदर बैचेस में से मेघालय का बैच चल रहा है, वहां पे मैं मैपिंग करा रहा हूँ, एंड दिस पीपल आर टेलिंग मी दैट दिस इज समथिंग विच इज वेरी मच फ्रूटफुल एंड वेरी मच यूजफुल। सो आई होप आपके लिए भी ये सारा बहुत ज्यादा फ्रूटफुल और यूजफुल रहेगा, ठीक है ना। एंड
This is what I believe. Clear? If you have any doubt, you may ask your doubt. Otherwise, we'll wind up the class and then we'll discuss in details things from tomorrow. शुरू रहेगा, ठीक है ना? And this is what I believe. Clear? If you have any doubt, you may ask your doubt. Otherwise, we'll wind up the class and then we'll discuss in details. So tell me if you have any doubt. Okay, so I believe there's no doubt. Okay, then I'll meet you tomorrow in the same time in the same place. Okay, or the timing has been will be sent to you. Okay, and till then, goodbye. Thank you. This is Mohit signing off. Jai Hind, Jai Bharat.